unless you do not try, you will never succeed. Here the word unless and do not, जो कि एक ही क्लॉज में यूज हो रहे हैं, दोनों नेगेशन को यानी कि मना करने को शो करते हैं. सो हेयर यू हैव टू रिटेन ओनली वन वर्ड. ठीक है, या तो आप अनलेस यूज कर लें या डू नॉट यूज कर लें. ठीक है, अगर आप अनलेस को रिमूव करते हैं, अनलेस का फुल मीनिंग होती है इफ नॉट. अगर आप अनलेस को रिमूव करते हैं, यू हैव टू पुट हियर इफ. And your final sentence would be, if you do not try, comma, you will never succeed. Full stop. And अगर आप unless को retain करते हैं, do not को remove करते हैं, so that is very easy. आप unless you try, you will never succeed. So these two can be your correct sentences.